deleted many of my videos. Now let's see. Hope it's yeah. So once again, we will go back to the concept of shells and subshells where we learned about this K, L, M, N, O. These are the main shells. These main shells consist of sub energy levels or sub shells. ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आप फिगर में देख सकते हो, यहाँ पे K शेल है. K shell के अंदर there is only one subshell. One subshell, there is one subshell doesn't mean कि s orbit में there is only one orbital. It means this one is designating that this s subshell belongs to the first orbit or first principal shell. Similarly, 2s and 2p. Okay, belongs to the L shell, which is the second main principal shell. Okay, then this 2 represents it belongs to the second shell. Similarly, going to the third main shell, there is 3s, 3p, 3d subshells. ठीक है, अब ये 3s, 3p, 3d इसमें से जो 3 है, it represents the third main shell, which is M shell. Similarly, N and O. Okay. This is the graphical representation which we did yesterday. The graph is plotted against increasing energy versus sub-energy level. So as the number of shells increases, as the shell size increases, the energy also increases. ठीक है, जैसे कि when n is equal to 1, which is a K shell, it is the 1s subshell or 1s orbital. When n is equal to 2, it is the L main shell, which consists of 2s and 2p subshells in it. Now, if you see over here, the 2s has got lesser energy in comparison to the 2p. Similarly, 3s has got lesser energy in comparison to 3p, but the 4s orbit, the 4s subshell has got lesser energy in comparison to the 3d subshell of the third main shell. तो जैसे जैसे size increases, energy also increases. ठीक है? Yeah. Now coming to the quantum numbers, we had stopped yesterday at azimuthal quantum number, but just a brief revision about principal quantum number. What are the 4 quantum numbers? Can anyone tell me? Yes. Principal quantum number, principal, azimuthal, magnetic, and spin quantum number. Spin quantum. Yeah. Let me ask Tahira, can you tell what are the 4 different quantum numbers? Yes, ma'am. Principal quantum number, azimuthal quantum number, magnetic quantum number, and spin quantum number. Correct. Principal quantum number is represented as n. Azimuthal quantum number is represented as small l. Magnetic quantum number as small m, and spin quantum number is represented as s. Now, the principal quantum number n is given, the shape is given over here. ये क्या डिनोट कर रहा है? ये बोल रहा है कि I am the principal quantum number and I am going to say about the distance of the shell from the nucleus, which is denoted as n. When we say n is equal to 1, first shell. When we say n is equal to 2, it is the second shell. तो ये कौन decide करेगा? It is the principal quantum number n. Then coming to the azimuthal quantum number, which is also called as angular momentum quantum number. Okay, अभी ये तो समझ में आया कि so and so shells है और ये उसका number है 1, 2, 3, 4 K, L, M, N. But what is the shape of the orbital? That is, what is the shape of that sub shell present in the main shell? Whether it is spherical, whether it is dumbbell, whether it is diffused, whatever. So that will, who will tell us? This particular L, which is azimuthal quantum number.
Then after knowing the distance and the shape of the orbital, now what is the orientation of that particular electron present in the shell? उसका orientation कैसा है in space? So उसका orientation भी जानना जरूरी है. So when we know the orientation, we will come to know, okay, these many orbitals are present in the main shell. And this is how the electron spins, whether the spin is parallel or anti-parallel. So that can be explained by spin quantum number S. Okay, so one by one, we will brief ourselves. Now, the first one, principal quantum number. So, principal quantum number N, as I told you, it explains us the distance of the shell from the nucleus. It tells us about how the energy is, increasing as the shell is going farther and farther away from the nucleus. So, जितना दूर वो shell रहेगा nucleus से, उतनी ज़्यादा उसकी energy रहेगी. ठीक है, एक चीज. दूसरी चीज क्या है, यहाँ पे उसका साइज. So when the energy of the shell or the orbit increases, the size of the shell or orbit also increases. Obviously, वो न्यूक्लियस के अतराफ जो है वो सर्कुलर मोशन में है, तो उसके जैसे जैसे उसके दूर जाएगा वैसा वैसा उसका साइज भी बढ़ेगा, उसका एनर्जी भी बढ़ेगा, उसका डिस्टेंस भी बढ़ेगा. ठीक है. So based on this, the table over here, as I told you in the first slide, the maximum number of electrons in the first in any orbit has to be 2n square. So K has how many electrons? Yes, Toha. K has how many electrons? Toha is there. Yes, ma'am. मेरे बोल रहे हैं 2 ma'am 2. Yes. So why 2? Because it is 2n square. 2 into what is n? N is 1 over here. So 2 into 1 square is 2. Then coming to the second shell. The second shell is represented as 2. So 2 into 2 square is 8. M has got 18 electrons. So 2 into 3 square is 18 electrons. N has got 32 electrons. So you can see over here, with the increase in size of the shell, with the increase in the energies of the shell, with the increase in the distance of the shell from the nucleus, the number of electrons also increases. Okay. So this is about principal quantum number N. Now coming to azimuthal quantum number. Now, azimuthal quantum number, which is also called as angular momentum number, it gives us the shape of the orbital. Okay, how it gives us the shape of the orbital? There is certain formula for it. What is the formula? L is equal to, yes, L is equal to n minus 1. So when we say L is equal to n minus 1, but remember, whatever the value comes, we are not going to put up that value directly, because every time the values of L, that is the azimuthal quantum number, the values of L ranges from 0 to n minus 1. तो जो भी आपका आंसर आया हो उसको हमेशा हमें 0 से लिखना शुरू करना है. ठीक है. For example, let's look at this pink table first. Now, when n is equal to 1, the first shell, the first K shell, when n is equal to 1, when I substitute this in the formula, I get 1 minus 1 is 0. So the value of L which I am getting is 0, which is the initial value. ठीक है. तो ये टेबल में मैंने L is equal to 0 लिखा. Okay. 0 represents S subshell. 0 represents S subshell. हमेशा याद रखना. Whenever L is equal to 0, 0 represents S subshell. What is this S? S is derived from the name sharp orbital. S is derived from the name sharp orbital. Now, how many electrons are present in it? 2 electrons. This S subshell has the capacity to take in only the 2 electrons.
Why only 2 electrons? That we are going to see further in the second slide. Okay. Similarly, when n is equal to 2, okay, over here, just look down at the table. When n is equal to 2, when we substitute the value L is equal to n minus 1, the answer I get is 1. So over here in the pink table, L is equal to 1. 1 represents the p orbital or p subshell or p sub energy level. Okay. When L is equal to 1, it is the p. What is p? P is the principal orbital. P is the principal orbital. Okay. Then when n, so when it is 1, but I had told you the value of L always ranges from 0 to n minus 1. ठीक है, ये आपको याद रखना है. बल्कि आपको आंसर यहाँ मिला 1, तो आप उसको लिखोगे कैसे? L is equal to 0, 1 आने तक आपको लिखना है. L is equal to 0, L is equal to 1. 0 represents S subshell, 1 represents P subshells. So in short, if I tell you the main shell L जिसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 है, वो मेन शेल में 2 सबशेल्स है. उन 2 सबशेल्स का नाम क्या है? उसका नाम है S और T. ठीक है. ये S कैसे हमें मिला? Because azimuthal quantum number L is equal to 0. 0 represents S, 1 represents the principal P subshell. ठीक है. Similarly, moving further, when the principal quantum number n is equal to 3. So 3, when I substitute in the azimuthal quantum number formula, 3 minus 1, I get 2. Coming to the pink table, 2 represents D subshell. 2 represents D subshell which is diffused. Okay, which is diffused. So 2 is representing D, but the values which I will write always for L is 0 onwards only. So till I get the number 2, L is equal to 0, L is equal to 1, L is equal to 2. So there are S, P, D. Why we are writing? L is always azimuthal quantum number जो है, ये शेप ऑफ द ऑर्बिटल बताता है. अब जैसे मैंने L is equal to 2 लिखा, तो 2 is denoting D, लेकिन उसके अंदर खाली D ऑर्बिटल डायरेक्टली तो नहीं आ सकता. उसके अंदर पहला फर्स्ट आना चाहिए, फर्स्ट सबशेल आना चाहिए, फिर सेकेंड सबशेल आना चाहिए, देन कम्स द चांस फॉर द थर्ड सबशेल. जैसे कि आप सीढ़ियां चढ़ते हो. फॉर एग्जाम्पल, वन स्टूडेंट स्टेज ऑन फर्स्ट फ्लोर, सेकेंड स्टूडेंट स्टेज ऑन थर्ड फ्लोर. जो फर्स्ट फ्लोर वाला स्टूडेंट है वो स्टेज चढ़ के फर्स्ट फ्लोर में जाएगा, फॉर एग्जाम्पल, करेक्ट. जो थर्ड फ्लोर वाला स्टूडेंट है, कैन द स्टूडेंट जंप डायरेक्टली ऑन टू द थर्ड फ्लोर? नो, है ना. पहला फर्स्ट फ्लोर क्रॉस करना पड़ेगा, फिर सेकेंड फ्लोर एंड देन थर्ड फ्लोर बाय स्टेयर्स. Understood? Same is the case over here also. L is equal to 2 means the student is residing on third floor, for example. तो उसको पहला first floor, second floor, and then the student will go in the third floor. Similarly, the third main shell consists of S, P, D subshells, where L is equal to 0, L is equal to 1, and L is equal to 2. ठीक है. So whenever we say the main shell M, जिसका principal quantum number 3 है, how many subshells are present in it? Name them. Simple. 3s, 3p and 3d. ये 3s, 3p, 3d कहाँ से आया? 3 तो डिनोट करता है वो थर्ड मेन शेल को. spd कहाँ से आया? ये spd हमें आया azimuthal quantum number से, जो कि कहता है L is equal to n minus 1. So whenever I get this value 2, तो इसका मतलब है वो 2 मुझे डायरेक्टली नहीं मिला है, उसके अंदर 0 भी है,
उसके अंदर 1 भी है, उसके अंदर 2 है। कल मैंने आपसे कहा था जैसे नंबर लाइन फॉलो होता है ना 0 1 2 3, उसी तरीके से यहाँ पर भी हमें फॉलो करना है, ठीक है। Similarly, when n is equal to 4, the principal quantum number n shell is equal to 4. So 4 minus 1 will give me how much? 3. Here, the value of L is equal to 3. 3 denotes the F subshell, which is fundamental. Okay? 3 denotes F subshell, which is fundamental subshell. अब when I write this 3, obviously मुझे इसको value का जो range है जो कि 0 to n minus 1 से शुरू होता है, तो I will have to write in that manner only, where L is equal to 0, L is equal to 1, L is equal to 2, and L is equal to 3. So in short, the fourth main shell consists of S, P, D, F subshells. ठीक है, समझ में आया यहाँ तक सबको? Yes. Is there any doubt till here? Is there any doubt? हाँ मैम। मैम इसके आगे भी जा सकता है ना, मीन्स हाँ, अगर जा 5 सकता है। L is equal to 4, L is equal to 5. Yes, 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 जा सकता है, इसके आगे भी जा सकता है। ये टेबल आपने लिखा था कल? Yes मैम, Yes. लिखा है। तो इन कंटिन्यूएशन विद दिस, अभी जैसे ये मैंने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है मैंने आपको भी बताया नहीं ठीक से, ये वैल्यूज मुझे कहाँ से आए, क्यों एस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, पी ऑर्बिटल कैन ऑक्यूपाई ओनली 6, डी कैन ऑक्यूपाई 10 एंड एफ कैन ऑक्यूपाई ओनली 14. द रीजन इज ओवर हियर, ठीक है। तो जैसे कि अभी हमने पढ़ा कि द azimuthal quantum number L will give us the particular shape of the particular shell, ठीक है, because this is only going to define, जैसे फर्स्ट शेल है तो ये सिर्फ s ऑर्बिटल को लेगा, ठीक है। s is spherically natured, वो शेप ऑफ द ऑर्बिटल्स हम आगे जाके देखने वाले हैं। हेलो, यस, Yes, ma'am. प्लीज म्यूट योरसेल्फ। हाँ, then this L will is actually telling me कि ये 1 में s ऑर्बिटल है, फिर L when L is equal to 1 it is the p ऑर्बिटल, बट उसके अंदर sp है और p ऑर्बिटल भी है। Similarly when L is equal to 2 it is s p d ऑर्बिटल्स। अब ये s p d तीनों के शेप तो सेम नहीं होंगे, तीनों के अलग अलग होंगे, वो कैसे शेप्स होंगे ये हम आगे देखेंगे, बट इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर अस टू नो हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स शुड बी देयर इन ईच सब शेल। मेन शेल में तो हमें समझ में आया द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज 2n²। ये 2n² का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके का है, ये 2n² तो हमने पढ़ लिया है, n is equal to 2 मींस 8 इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए सेकेंड शेल में, लेकिन ये 8 इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन भी तो प्रॉपरली होना है। ये 8 इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन जो मेन शेल में हो रहा है उसके अंदर सब शेल्स हैं, sp है, pb है, db है और f भी है। s की कैपेसिटी उतनी नहीं होगी जितनी p की होगी, p की उतनी नहीं होगी जितनी d की होगी, d की उतनी नहीं होगी जितनी f की होगी, ठीक है। तो ये चीज हम कैसे पढ़ेंगे, द एंगुलर मोमेंटम बाय मींस ऑफ एंगुलर मोमेंटम, where the quantum number L is used to calculate the angular momentum of an electron in a particular subshell. Okay, so here when we speak about angular momentum, the orbital angular momentum is capital L. Don't get confused with the main shell. मेन शेल में भी there is L, ये वो वाला L नहीं है, ये ऑर्बिटल और एंगुलर मोमेंटम L है ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, जो कि हमें बताएगा कि सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। सो द फॉर्मूला फॉर दिस इज कैपिटल L, which is angular momentum is equal to h upon 2 pi root of L into L plus 1, ठीक है, रूट ऑफ L into L plus 1, ठीक है, where h is the Planck's constant,
Now it says that each subshell consists of 2 into 12 plus 1 electrons. Okay, from here we get this actual values. When we just solve this, we get 2 into 12 plus 1 electrons. So we have to simply substitute the value of L in this formula. So for s orbital 0, I had told you L is equal to 0 for s orbital or s subshell. So over here, if I just go behind one slide, 0 is representing s. ये 0 हमें यहाँ से मिला था n minus 1 से. ठीक है, तो ये 0 को ये फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करो. 2 into 0 is 0, 0 plus 1 is 1, 1 into 2 is 2. So s orbital consists of 2 electrons जिसका azimuthal quantum number 0 है. Similarly, here L is equal to 1, which is representing the p orbital. ठीक है, so just 2 into 1 plus 1, how much it is? 3. 3 into 2 are how much? 6 electrons. So p orbital over here, which is principal orbital, can occupy these 6 electrons in its space. Okay, this is how the distribution takes place. Now d orbital के लिए 2 is the L is equal to 2. So substitute the value over here. 12 plus 1 में 2 into 2 plus 1, 4, 4 plus 1, 5, 5, 2 are 10 electrons. Similarly, f orbital consists of 14 electrons. So when we look at these 2, 6, 10, 14 electrons, we understand one thing, कि s orbital का उतना capacity नहीं है, तो उसका size भी कम होगा. p orbital में little bit more capacities है, तो उसके orbitals में भी कुछ ना कुछ रहेगा, उसका shape, size, which is able to adjust these 6 electrons. Similarly, the d orbitals, which is diffuse, and lastly the f orbital, which is fundamental orbital. So this is how the distribution of electrons takes place in the sub-energy level, subshells और orbitals. ठीक है, ओवरऑल मेन शेल का तो हमने पढ़ लिया 2n स्क्वायर 2 8 18 32. ये 2 इलेक्ट्रॉन्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं वो ये हमें सब शेल में पता चलेगा. जैसे कि फॉर एग्जांपल व्हेन वी गो इनटू अ बिल्डिंग, ठीक है, वी डोंट नो द स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ ईच एंड एवरी फ्लैट्स. we climb the stairs, we go to the floor. Okay, we see over here 101 is just next to the lift, 102 is adjacent to 101, but 103 is opposite to 101. So this is the spatial arrangement of the flats in that flow. Same is the case over here also. This is how the electrons are adjusted in each and every orbital belonging to the main shell. समझ में आया सबको? Yes. Yes, ma'am. Yes, Please ma'am. write down this. Please write down this formula and write down this distribution of electrons. यहाँ से लिखना है आपको, हाँ? L is equal to h upon 2 pi. What is L? Mention it. What is h? Mention it. Then you write down the maximum. The maximum number of electrons in the subshell is 2 into 2L plus 1, and write down this number of electrons also. मैम, हेलो मैम. मैम वो SPDF के बाद क्या लेंगे ऑर्बिटल का नाम? SPDF में ही वो घूमता रहेगा बेटा. अच्छा, वो SPDF. हाँ यस, उसमें रहेगा. ठीक है मैम, थैंक यू. तो जो पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट्स है अभी उसके अंदर अपन ने वो बनाया ना SPDF, वो ग्रुप्स रहते हैं. कौन सा ये? नहीं, पीरियोडिक टेबल में. हाँ, तो वो इसी के ऊपर बेस्ड है कि जो एलिमेंट्स है वो इसी के अंदर, मतलब ये इतने सबशेल्स के अंदर वो करते रहेंगे उसके इलेक्ट्रॉन. The main shell will increase now.
आगे हम देखेंगे हाउ इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डन, कि कब वो s में जाएगा कब p में जाएगा, वो है ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल where it gives us the distribution of electrons, that we will see it further. आगे है ये कंसेप्ट, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप बोल रहे हो ना कि किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन होगा, हाँ, दैट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज द फॉलो अप टॉपिक ऑफ दिस। Okay, ma'am. Ma'am, please show the next slide. सब मत लिखो, हाँ, नोट्स में दिया है, खाली ये फॉर्मूला और ये चीज। Let me know if you have completed. Now, after knowing the size, the energy level, the distance to principal quantum number, now we know the shape of the orbital, like shape of the subshells, which belongs to the main shell, कैसे होना चाहिए, sharp, then principal, diffuse, fundamental, उसके अंदर कितने electrons होना चाहिए, उनकी capacity कितनी है electrons occupy करने की, we know this. Okay, so the interior part of that particular shape or the shell is being done. Now comes the next one, which is magnetic quantum number, which will give us the orientation of the electron. Means कितने electrons है और वो कौन कौन से orbital को belong करेंगे, ठीक है। ये तो हमने देखा था उधर L में भी, but exactly how we are going to match it, उसका ओरिएंटेशन कैसे रहेगा, वो हम अभी देखने वाले हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर m में, ठीक है। नाउ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर यू जस्ट सी, रिकलेक्ट, क्या आप जब नंबर लाइन बनाते थे तो यू नेवर यूज्ड टू मेक जस्ट द राइट साइड ऑफ इट, लाइक 0 1 2 3 4 5, you used to make the left side also, -1 -2 -3 and so on. Okay, now m says I have the integral values with negative integers and positive integers as well as 0 in it. m क्या कहता है, मेरे पास सारे नेगेटिव वैल्यूज भी है, नेगेटिव इंटीजर्स भी है, पॉजिटिव इंटीजर्स भी है और जीरो भी है, जैसे कि नंबर लाइन में होते हैं। So this is what m is telling me. Also, m is also telling one thing, to calculate myself, you need to put up this formula, which is 2l plus 1. What is that? 2l plus 1. These are the values m possesses. 2l plus 1 जो भी आंसर आया है उसको मुझे नंबर लाइन फॉर्म में लिखना है। नंबर लाइन फॉर्म में मतलब इंटीग्रल वैल्यूज लिखना है, which is ranging from -1 -2 0 1 2 3 that way, ठीक है। So here it is in the first point given very well, the values of m are governed by the values of l, obviously. L मालूम होगा, पहले n जानना जरूरी है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो कि हमें पता है, फिर L हमें कैलकुलेट करना है कि क्या शेप रहेगा, SPDF, उसके बाद में we have to know what are the different values, what is the orientation. तो orientation के लिए we have to see the negative, the positive values also, ठीक है। So how do we calculate it? We will calculate it by putting up the formula 2l plus 1. Okay, so this 2l plus 1 will tell me, okay, this electron belongs to this orbital, this electron belongs to that orbital, these are the first electrons which will go in the 1s orbital, then 2s, then 2p and so on, ठीक है। So for example, s subshell के लिए l is equal to 0, ठीक है। I will simply put the value over here. What is the value if I put over here? 2 into 0 plus 1. What is the answer I am getting? 1. 1. 1.
that one is actually representing these integral values. वो वन जो मुझे आंसर में आया वो वन यहाँ पे लिखने वाली नहीं है, वो वन मुझे इंटीग्रल वैल्यू बताएगा. तो फर्स्ट इंटीग्रल वैल्यू इज 0. ठीक है, ये फर्स्ट वैल्यू है 0. ओके, सो इट मीन्स दैट S sub shell has L is equal to 0. Therefore, M is also equal to 0. It means that S sub shell contains only one orbital, that is S orbital. Okay, यानी कि M is equal to 1, यानी कि एक ही ओरिएंटेशन है, एक ही ओरिएंटेशन है, एक ही ऑर्बिटल उसके अंदर प्रेजेंट है एस सब शेल के अंदर. वो कौन सा ऑर्बिटल है? सबसे पहला ऑर्बिटल शुरू होता है एस ऑर्बिटल. तो वो m इज इक्वल टू 1 आने का मतलब है मैं ये इंटीग्रल वैल्यूज में से आई विल पिक अप दैट नंबर, दैट वैल्यू, आई विल पिक अप दैट इंटीग्रल वैल्यू फ्रॉम दीज रेंज ऑफ m. ठीक है, सो व्हेन m इज इक्वल टू 2l plus 1, 2 into 0 plus 1 which is 1, तो 1 शुरू होता है 0 से. Therefore, m is equal to 0. That means S subshell has got only one s orbital. ठीक है, ये जो ONU1 लिखा है ना 1, ये क्वांटिटी वाला 1 है. It is not representing the main shell. ये जो आप लास्ट लाइन देख रहे हो ना, this means that the S subshell contains only one orbital. ये one क्वांटिटी वाला 1 है, मतलब उसके अंदर एक ही s ऑर्बिटल है. S subshell के अंदर एक ही s ऑर्बिटल है. ठीक है, whenever I will write down as figure as 1s, 2s, वो फिगर्स में लिखूंगी, that means it is belonging to that main shell. समझ में आ रहा है? I hope you all are not getting confused. Getting? Yes, ma'am. Yes, Yeah, ma'am. ma'am, understood. Yeah. Similarly, let us see the next value. Say for example, L is equal to 1. Okay, when L is equal to 1, simply I will put up the value here. 2L plus 1, 2 into 1 plus 1. 2 into 1 plus 1 is how much, students? 3. ठीक है, मतलब M का वैल्यू 3 आया है मुझे. वो 3 values I am going to pick up from these integral values of M, which is ranging from negative to positive. Okay, so अब इसके 3 values है, वो 3 values में कैसे लिखूंगी? I'll begin with the positive integer, plus 1, 0, minus 1. समझ में आया? How I am going to represent these 3 values of M in the P subshell? I'll begin from the positive integer, plus 1, then 0, and then minus 1. Followed? So for P subshell, L is equal to 1, and therefore M is equal to plus 1, 0, minus 1. These 3 values tell me that P subshell has actually got 3 p orbitals in it. ये 3 जो मैं बोल रही हूँ ये क्वांटिटी वाला 3 है, यानी कि P subshell के अंदर there are 3 p orbitals. अब ये 3 p orbitals कैसे हैं, इनका नाम क्या है? इनका नाम है px, py and pz. px ऑर्बिटल का ओरिएंटेशन इज ऑन x एक्सिस, py का ऑन y एक्सिस एंड pz का ऑन z एक्सिस. ठीक है, so these 3 p orbitals, it's not necessary they have got same and equal energies. No, whenever they are in magnetic fields, their energies are different, they are degenerate in short. And if they have if there is absence of magnetic field, then in that case all 3 p orbitals have equal energies. Okay, followed everyone? Okay. Yes, ma'am. So whenever the magnetic field is absent, the p orbitals have equal energies, that is they are degenerate. But in the presence of magnetic field, its 3 p orbitals will behave differently. जैसे घर में 3 बच्चे होते हैं ना, some guest comes, तो क्या होता है, मदर फादर का दोनों का इंस्ट्रक्शंस होता है, do this, do that, do this. But then these are 3 different children, 3 different fingers on your hand, so definitely they will not behave in the same manner.
they will behave differently. Same is the case over here also. When in the absence of magnetic field, they have equal energies, but in the presence, their energies are different. So the P sub shell has got L is equal to 1. Therefore, there are 3 integral values. What are these 3 integral values? +1, 0, and -1. That is मैम Px, Py, and Pz orbital. Okay. हेलो मैम Yes. Yes. मैम बोलो. ये m की वैल्यू ये मतलब 1 0 -1 ही क्यों मतलब ले रहे हो आप? मतलब वो समझा कि जो है 2l+1 उसमें जब l अब की वो वैल्यू क्यों ले 1 रहे डाल हैं? रहे हाँ. ओके. वो अभी समझा देखो बट यहाँ मैंने आपको एक्सप्लेन किया था ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के स्लाइड में. वी हैव टू बिगिन विद 0. ठीक है. वी हैव टू बिगिन विद 0 बिकॉज L इज इक्वल टू 0. तो 0 से शुरू होगा. नंबर लाइन भी देखो आप 0 से ही शुरू करते हो कभी भी. तो 0 0 के बाद में गो टू पॉजिटिव एंड देन कम टू नेगेटिव. सो +1 0 -1 in connection. Okay. ओके समझा समझा. Please write down this. Write down the heading magnetic quantum number. Roll number 22 to 42. They will wait after the lecture. We have to conduct a short meeting, mentor-mentee meeting. मैम ये पूरा कंप्लीट लिखना है? नहीं पूरा नहीं लिखना है. मैग्नेटिक क्वांटम नंबर m लिखो, फिर ना इसका सेकंड और थर्ड पॉइंट लिखो. राइट डाउन द सेकंड एंड थर्ड पॉइंट. सेकंड एंड थर्ड हो गया तो लेट मी नो. Finished with the second and third? Okay. Everything is there in the notes, just the second and third point. Done? Now? Ma'am, This that is one. 2l+1, no? In third point. Which one? Thus for L a है ना, given 12 वो which one you are asking? that one only, that one only. Thus for a given value of L है वो L. वो L है ना, राइटिंग में ऐसे ही आता है. It looks like 1. Then write down for this, for S subshell and P subshell. S और P के लिए examples लिखो. Similarly, we will see for D and F also. Done? Understand and write, huh? Understand and write. Still there only, na? For S subshell L equals to 0, therefore M equals to 0. हाँ, M therefore M is equal to 0. ये L is equal to 0 कहाँ से आया था? N minus 1. 1 minus 1 0. है ना? So ma'am, after that we have to directly write for P subshell, no? Yeah, P subshell also. Similarly, for D subshell. Now, for D subshell, L is equal to 2. Okay. Then substitute this value of 2 in the formula for M. 2L plus 1. How much it is? 2 into 2, 4. 4 plus 1, 5. ठीक है.
अब ये 5 is the actually integral values of m. So for these integral values, how are we going to write? Coming to the number line again. So these 5 values will be written as follow: +2, +1, 0, -1, -2. +2 से स्टार्ट होगा, वो इंटरकनेक्टेड है. +2, +1, 0, -1, -2. That means when m is equal to 5, it means that m has got 5 integral values ranging from positive integer to negative integer. Okay, this shows these 5 different integral values are actually the 5 or d orbitals present in the d subshell. D subshell contains 5d orbitals. ठीक है, ये 5d orbitals पांचों के पांचों एक दूसरे से अलग है. ठीक है, कब? in the presence of magnetic field. But in the absence of magnetic field, all these 5d orbitals have equal energies. And how are they written as? They are written as dxy. What are the name of these 5d orbitals? dxy, dyz, dxz, dx square y square, and dz square. So this is the different orientations of these 5d orbitals. Similarly, when L is equal to 3 for F subshell, I get M as what value? M का value बोलो कितना है? 7. 7 ना. तो उसको कैसे लिखना है? +3, +2, +1, 0, -1, -2, -3. 7 integral values are there for magnetic quantum number, which is telling me, okay, these are the 7 f orbitals present in the f subshell with different orientations. ठीक है, with different orientations means उसके अंदर ये जो 7 f orbitals है, उनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स जाने हैं. ये हर एक 7 ऑर्बिटल्स का कुछ कैपेसिटी है इलेक्ट्रॉन्स जाने का. व्हाट आर दीज 7 डिफरेंट ऑर्बिटल्स? बोलो, ये शायद ही आप लोग ने पढ़ा है. आगे इसके ऊपर इतना f ऑर्बिटल्स के ऊपर इतना नहीं है. d ऑर्बिटल्स तक ही जनरली स्टडीज आते रहे. f ऑर्बिटल्स हैं पर उतना नहीं. बोलो, fx3, fy3, fz3, fxyz, fy x square, z square, fx z square, y square, and fz x square, y square. So these are the different 7 f orbitals. Okay. So in short, जो भी हमने पढ़ा है वो टेबल में हमने ये लिख दिया है, जहाँ पे L is the angular momentum quantum number. Number of orbitals present in this particular subshells is 2l plus 1. 2l plus 1 is nothing but magnetic quantum number, which is ranging from plus L or minus L to plus L or plus L to minus L, but in continuation. Okay? Followed everyone? Just write down this table, please. मैम ये क्या मतलब समझा नहीं है. dxy जैसा अभी आया ना, जैसे अभी L की वैल्यू 2 लिए तो वो आया, तो dxy dyz कैसे लिखते, मतलब समझा नहीं. ये याद करना है या कुछ है इसका भी? नहीं, अभी इनका Yes, ma'am. Can you ओरिएंटेशन हम re-explain? इनका शेप हम आगे जाके देखेंगे. ये dxy का शेप क्या है, dyz का क्या है, dz का क्या है, इनको नाम दिया गया है. अब 5d orbitals every time I tell you this is d1, d2, d3, d4, d5, पर ये ओरिएंटेशन बता रहा है. ओरिएंटेशन इज ऑलवेज अलोंग विद x y z एक्सिस. तो जब ओरिएंटेशन ऑफ एनी ऑर्बिटल इज अलोंग विद दिस 3 एक्सिस, देन इसको नाम भी उसी तरीके से दिया है. dxy, dyz means orientation is between x and y axis. yz is the orientation between y and z axis. Similarly, in this way, these are the 5 different orbitals that are present in the d subshell. इसमें और डीपर स्टडीज है, जैसे आप बोल रहे हो ना, इतने हमें है नहीं. हमको खाली ये ऑर्बिटल्स के नाम लिखना है
और इनके शेप देखना है, ठीक है। इनको नाम दिया गया ये 5D ओके मैम, ऑर्बिटल्स ओके, को मतलब वही ना based रिप्रेजेंट on करने the का तरीका। yes based on the orientation ओके of मैम, these 5D orbitals. ये टेबल लिख लो आप। डन? ये टेबल लिख रहे हैं। हाँ हाँ okay. Now the last one is spin quantum number. Spin quantum number is denoted as S. Now imagine one thing, all are going in one direction only, all are electrons going in one direction. What do you think, what will happen? Is it correct? No. When we speak about the orientation of the electrons, we speak about the orbitals, we speak about the subshells, it has got this much capacity of electrons, then how is the electron spinning? It cannot spin in one direction only. There has to be two different directions. What are these two different directions? Clockwise and anti-clockwise. So an electron can spin clockwise or anti-clockwise in two opposite directions. Okay. So in short, the electron has got two possible values. That is, a spin quantum number has got two possible values, but that are equal and that are opposite also. So all these are just sentences and words, but it has to be expressed by certain number. So here it says the probability of rotation of any electron is only half. That means the spin of electron is plus half and minus half. Means the पूरा एक rotation नहीं होगा, half, either plus half or minus half. Plus half किसके लिए? For clockwise rotation के लिए. Plus half किसके लिए? For clockwise rotation, and for anti-clockwise rotation it is written as minus half. तो ये प्लस और माइनस जो है इनको ऐसे भी बोल सकते हैं हम लोग पैरेलल और एंटी पैरेलल स्पिन्स, इनको ऐसे भी बोला जा सकता है। क्या बोल सकते हैं इसको? पैरेलल और एंटी पैरेलल स्पिन. When we speak about parallel spin, we say it is plus half. When we say it is anti-parallel spin, then it is minus half. Obviously, yes, spinning of electron is possible only when any compound or when any atom is placed in the magnetic field. जो हमने polymer में पढ़ा था ना, how why the electron gets delocalized. When it is placed under some electrical field or some compound or something is placed in the magnetic field, there has to be some movement inside the compound. What is that movement actually related to? It is related to the spinning of electrons only. Okay? So electron has got plus half and minus half spin rotation. Okay? So these are the different subshells with the values of L. This table already you have done. How many orbitals are present in SPDF? That also we have understood now. What are the number of orbitals that are present? ये भी हमने अभी calculate करके देखा. And lastly, what are the maximum number of electrons? What is the formula for calculating the maximum number of electrons in the subshell? Bolo or orbital? What is the formula? 2 into 12 plus 1. Yeah. 2 into 12 plus 2 into 12 plus. Actually give me these many number of electrons present in S, P, D and F orbitals. Followed everyone? Whereas 2n square will give me the maximum number of electrons present in the main shell. Followed everyone? Is तो it मैम clear वो to you all? h/2 pi √1 + l प्लस वो कौन सा किसके लिए यूज वो नहीं, वो ना, इसका देखो ये इन्होंने सिर्फ फॉर्मूला दिया है, इसको सॉल्व करने के बाद में इसके ऊपर बहुत सारा कंसेप्ट है, तो वो उन्होंने पूरा डीपर नहीं दिया. मैंने आपको ये बोला एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर जो है ये चैप्टर में से दे हैव ओनली इंक्लूडेड द मेन इंपॉर्टेंट पार्ट. जैसे यहाँ पे उन्होंने बोल दिया एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड करना है, तो इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स भी है जो कि आपके सिलेबस में नहीं है, which is given as h/2 pi root of L into 1.
ठीक है, तो ये फॉर्मूला जो है बेस, ये फॉर्मूला को सॉल्व करने के बाद वी विल गेट दीज वैल्यूज ऑफ 2 into 12 plus 1, that is the number of electrons. So this is directly given, you don't have to see it, लेकिन आपको ये फॉर्मूला याद रहना चाहिए, where L is the angular momentum of the electron, capital L, H is the Planck's constant, into root of L into L plus 1, L plus 1 है ब्रैकेट के अंदर. So this is all about the spin quantum number, magnetic quantum number, azimuthal quantum number, and last the principal quantum number. Here we complete with all the quantum numbers. Now in the next lecture we will study the electronic configuration. मतलब अभी जो भी हमने पढ़ा है उसको अभी अप्लाई करना है कि ये पर्टिकुलर ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे, वो ऑर्बिटल में p ऑर्बिटल में कितने जाएंगे, d में कितने जाएंगे, जो ये तीन p orbitals है, how many electrons each orbital of the p subshell can occupy the number of electrons, that we are going to see in the electronic configuration. Followed everyone? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay.